Ghazwa-e-Hind fatwa fire singes Darul Uloom. NCPCR demands FIR and action taken against the Madrasa body. उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश की जमीन का इस्तेमाल अगर राष्ट्रद्रोह की गतिविधियां बच्चों को सिखाने के लिए किया जा रहा है तो राष्ट्रद्रोह की धाराओं के तहत दारुल उलूम देवबंद पर FIR दर्ज की जाए. Madrasa justifies Ghazwa-e-Hind. Darul Uloom hits back at the child rights body. Says conspiracy to target Muslim educational institution. Can an attack on India be justified? Ghazwa-e-Hind fatwa in the eye of a storm. That's our top focus on India First. So what is Ghazwa-e-Hind? Some Muslim scholars say it's translated as war with Hind or Hindustan. So a war against Hindustan. The National Commission for Protection of Child Rights says Madrasa Darul Uloom Deoband fatwa appears to give validity to the concept of Ghazwa-e-Hind and may lead to hatred against one's own country. The question that we're asking, is this fear-mongering? Is this politics of polarization ahead of 2024 elections? Or is there merit that even if this is an old fatwa, the mindset of Ghazwa-e-Hind poses a threat to Bharat? Priyank Kanungo, chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights, joins us on India First for more on this big story. I'm Gaurav Sawant. As always, let's get started with the headlines on India First. BJP ups the ante against Mamata Banerjee government in Bengal, releases a documentary on the horrors of Sandesh Khali, demands the arrest of the absconding TMC strongman Sheikh Shah Jahan. Aam Aadmi Party and Congress close in on a seat-sharing pact. Sources say Congress offered 3 seats in Delhi. Haryana and Gujarat deal also sealed. Punjab remains deadlocked. Siddaramaiah government changes Karnataka temple tax ceiling. BJP questions why no taxes on mosques. Chief Minister Siddaramaiah insists facts are being misrepresented by the BJP. Manipur High Court withdraws its order that sparked wide tensions in the northeastern region. Court modifies its earlier order to include Meiteis in the scheduled tribe category. Trouble mounts for Byju's founder Ravindran. Enforcement Directorate issues a lookout notice against Ravindran over alleged foreign exchange violations. A fatwa on the website of a very well-respected Islamic Madrasa, Darul Uloom, is in the eye of a storm. The National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR, has shot off a letter to the Saharanpur administration over this fatwa on the Darul Uloom website that, according to the NCPCR, attempts or appears to justify the concept of Ghazwa-e-Hind or war against India. The NCPCR wants an FIR registered and action taken on the fatwa, which the Darul Uloom in its defense insists has been on its website since 2008. India Today's Samarth Srivastav with our top story. Darul Uloom Deoband, one of India's most well-respected Muslim education centers, is in the eye of a storm. An institution that issues directives and guidelines that are followed by Muslim students studying in madrasas, not just in India, but across the region. Darul Uloom is facing flack over a fatwa on Ghazwa-e-Hind. Literally translated,
as war on Hindustan. The National Commission for Protection of Child Rights has shot off a letter to the Saharanpur administration in Yogi Adityanath's government in Uttar Pradesh, seeking the registration of an FIR for the fatwa on the website. The NCPCR seeks an FIR against Darul Uloom, and legal action has been sought for the objectionable fatwa. Ghazwa-e-Hind has been glorified according to the NCPCR. It says that even martyrdom attacking India has been glorified. The Uttar Pradesh government has initiated a probe. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस प्रकरण को आवश्यक कार्रवाई और विशेष रूप से उनका निर्देश है कि इसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में मेरे द्वारा मैं जिलाधिकारी सहारनपुर हूँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में पूरी तत्परता से माननीय आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई करके अवगत कराएं। The NCPCR letter says the fatwa is exposing children to hatred against one's own country and eventually causing them unnecessary mental or physical suffering. Some Muslim voices have defended the Darul Uloom. ये सिर्फ और सिर्फ देवबंद को बदनाम करने की साजिश है और मुझे लगता है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इसमें कामयाब नहीं होंगी। The Darul Uloom Deoband issued a statement challenging the probe and demand for an FIR against them. In a statement released exclusively to India Today, the Darul Uloom said, "We condemn this FIR and legal action. This is old information from 2008. Why have they suddenly woken up today? Why have they thought about it now, just before elections? This is an information about a past event when Muhammad bin Qasim invaded India between 711 and 713 AD. The information given was stated as such for that time. They are just trying to rake up something where there's nothing." The NCPCR invoked Section 13(1) of the CPCR Act 2005, emphasizing the potential for such content to incite hatred against the nation, a demand echoed both by the Bajrang Dal and the Vishwa Hindu Parishad. The NCPCR has sought an action taken report from the Saharanpur administration in 72 hours. With Samarth Srivastav in Lucknow, Bureau Report, India Today. So the National Commission for Protection of Child Rights in its letter to the Saharanpur administration says the fatwa talks about Ghazwa-e-Hind or invasion of India, and that whoever will be killed in this attack on Hindustan or war against Hindustan will be a great martyr. The question that we're asking here on India Today, does the fatwa glorify Ghazwa-e-Hind? Does it create ill will towards Hindustan or India? Does it send out a wrong message to lakhs of Muslim students studying in madrasas, not just in India, but across the region? Joining me on India First is Priyank Kanungo, chairman of the NCPCR. Also with me on India First, Maulana Sajid Rashidi, president of the All India Imam Association. Zeenat Shaukat Ali is the Director General of the World Institute of Islamic Studies, and Dr. Vikram Singh is the former Director General of the Uttar Pradesh Police. But I want to go to Priyank Kanungo first. Sir, why this demand for an FIR against a fatwa which the institution insists has been there since 2008? देखिए, ऐसा है कि अगर 2008 से आप कोई अपराध लगातार करते आ रहे हैं और वो अपराध अथॉरिटीज को आज पता चलता है किसी कंप्लेंट के द्वारा, तो अथॉरिटीज आज उस पर FIR करने के लिए बोलेंगी। आप 2008 में अगर अपराध कर रहे थे तो आज आप निरपराध घोषित नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, भारत के विरुद्ध किसी भी प्रकार के युद्ध को प्रेरित करना इज एन एक्ट ऑफ टेरर। ये आतंकी गतिविधियों की तरह ही लिया जाना चाहिए। जब आप बच्चों को प्रेरित करते हो ये बोल के कि
अगर गजवाए हिंद में कोई मारा जाता है तो वो ग्रेटेस्ट शहीद होगा, वो महानतम शहीद होगा। तो ये सब चीजें बच्चों के बीच में लेकर जाना बहुत गलत है। वो भी तब कि मदरसा दारुल उलूम देवबंद से एफिलेटेड हजारों मदरसे बांग्लादेश में, भारत में और पाकिस्तान में चल रहे हैं। करोड़ों बच्चे इनकी एडवाइजेज, इनके सिलेबस, इनके करिकुलम, इनकी किताबों के आधार पे पढ़ रहे हैं। अभी जो प्रखर बता रहे, जो आप समर्थ बता रहे थे कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये बता रहे हैं, मैं आपको यहाँ एक चीज और बता दूं, आई हैव द एविडेंसेस कि मोहम्मद बिन कासिम को भी इनके एफिलेटेड मदरसों में पढ़ाया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को भी ग्लोरीफाई किया जाता है। तो आप आतंक को कब तक ग्लोरीफाई करेंगे? और फिर बोलते हैं कि ये भूले भटके बच्चे हैं जो गलत काम कर रहे हैं। एक बड़ा आरोप भटकाने का काम आप कर रहे हैं। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, और आप ये कह रहे हैं कि आतंक को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, टेरर इज बीइंग ग्लोरीफाइड। बट प्रियंका अरुंगो, दारुल उलूम has also questioned the demand for an FIR and the timing of this letter, insisting that this entire exercise is aimed at 2024 elections with an aim to polarize the electorate. Sir, 2024 के चुनावों के मद्देनजर इस तरह का पत्र सहारनपुर प्रशासन को लिखा गया है, यह आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, हमको जब शिकायत मिलेगी हम तब एक्शन लेंगे। हमको इसी हफ्ते में शिकायत मिली, हमने इसी हफ्ते में एक्शन लिया। अगर हमको 2008 की इस मामले की शिकायत 2015 में, 16 में, 17 में मिली होती तो हम डेफिनेटली एक्शन लेते। ये एक बात तो मानते हैं ना कि गजवाए हिंद को ग्लोरीफाई करना गलत है, तो 2008 से उसे अपनी वेबसाइट पर रखे क्यों थे? क्यों इंतजार कर रहे थे कि 2024 के चुनाव के पहले हमारे पास शिकायत आ रही है और हम कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए पुलिस को डायरेक्शन दे रहे हैं? आप खुद गलती करेंगे, दूसरों को दोष देंगे। हमने 2022 में नोटिस किया, हमने कहा कि जितने भी इस तरीके की गलत जानकारियां वेबसाइट पे हटा लीजिए। हमने 2023 में नोटिस दिया, हमने कहा इस तरीके की सारी जानकारियां हटा लीजिए। 2023 में जब हमको ये जानकारी मिली कि माइनर्स के साथ इंटरकोर्स को, इंटरफोर्स को जस्टिफाई कर रहा है इनका लिटरेचर, हमने हटाने के लिए बोला पूछिए इनसे। जो हमको 2022 में शिकायत मिली कि इनका लिटरेचर जो है वो बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट देने को जस्टिफाई कर रहा है, हमने वो बोला। जब हमको शिकायत मिली कि इनका लिटरेचर गोद लिए गए बच्चों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने की बात करता है, उनको बायोलॉजिकल चिल्ड्रन से अलग मानता है, हमने इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा। हमको जब शिकायत मिलती है हम तब कहते हैं। अब इन सब समय पे तो चुनाव नहीं थे ना। ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मामले को पॉलिटिकलाइज करना चाहते हैं। यही ये पिछले डेढ़ सदी से करते आए हैं, 150 साल से यही कर रहे हैं जो आज कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो अहमद शाह अब्दाली को भारत बुला के लाए। अहमद शाह अब्दाली को गजवाए हिंद के लिए जिस आदमी ने आमंत्रित किया था, जिसने इनवाइट किया था, वो इनके आइडल हैं, वो इनके आदर्श हैं। उनका नाम जो है वो वलीउल्लाह देहलवी है। वलीउल्लाह देहलवी के आदर्शों पे इन्होंने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना और संचालन किया है। वलीउल्लाह देहलवी ने अहमद शाह अब्दाली को भारत में गजवाए हिंद के लिए आमंत्रित किया था। ये इन सब बातों को कैसे नकारेंगे? ठीक, लेकिन अगर केवल इस फतवे पर अभी अपने आप को हम लोग सीमित रखें, what are your objections to this fatwa on Ghazwa-e-Hind if Darul Uloom insists it is trying to explain only the concept, what Ghazwa-e-Hind meant in the context of Muhammad bin Qasim's attack on Hindustan in 711 to 713 AD, sir? मतलब वो कह रहे हैं कि हम तो केवल ये बता रहे हैं कि गजवा-ए-हिंद का मतलब क्या है और क्यों हदीस में इसका जिक्र है। देखिए, ये जो हदीस है, जिस हदीस का जिक्र कर रहे हैं, वो हजरत अबू हुरैरा की एक हदीस है जो सुन्नत अल नसाई पुस्तक में इमाम अल नसाई ने एक बकायदा चैप्टर के रूप में लिखी। इनके फतवे में मोहम्मद बिन कासिम का कोई जिक्र नहीं है। इनके फतवे में केवल ये लिखा गया है कि हाँ, गजवाए हिंद जो है वो हजरत अबू हुरैरा की एक हदीस है जिसे फलाना फलाना किताब में लिखा गया है, और गजवाए हिंद में जो भी मारा जाएगा
वो जो है महान शहीद कहलाएगा। इतनी बात अगर आप किसी 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं तो सोचिए जरा उसके दिमाग में आप किस तरीके का जहर डाल रहे हैं। और ये दारुल उलूम देवबंद का ही एक विभाग है, इसका ही एक डिपार्टमेंट है दारुल इफ्ता, उसने फतवा जारी किया है। वेबसाइट तो केवल एक माध्यम है, वेबसाइट तो एक केवल मीडिया है। जैसे मैं आज आपके चैनल पे कोई बात कह रहा हूं, वो बात मेरे जहन में है ना, मेरे दिमाग में है ना, मैं वही बात तो आपको बता रहा हूं। इसलिए वेबसाइट केवल एक माध्यम है, एक इनका डिपार्टमेंट है दारुल इफ्ता जो मदरसा के भीतर है, उसने ये फतवा जारी किया है। तो आपकी अब प्रशासन से अपेक्षा क्या है? एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? व्हाट डू यू वांट द एडमिनिस्ट्रेशन इन सहारनपुर टू डू, सर? देखिए, उत्तर प्रदेश की जमीन का सहारनपुर जिले का इस्तेमाल बच्चों को गलत तरीके से ग्रूम करने के लिए, बच्चों को गलत बातें सिखाने के लिए, भारत के खिलाफ जो है हमला करने की बात बताने के लिए हुआ है। ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह के लिए अगर उत्तर प्रदेश की जमीन का उपयोग हुआ है तो उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसमें एफआईआर दर्ज करे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को जेल भेजे। मुझे उम्मीद है कि 3 दिन बाद जब हमको उत्तर प्रदेश सरकार जवाब देगी तो एफआईआर दर्ज की जा चुकी होगी। That's a big thing that you're saying. ये राष्ट्रद्रोह है. This is, in your appreciation, something that's against the country. Sir, stay on with me, but let me now throw this open for a wider discussion. And we have a very well-respected panel that's joining me on India First. I'd request Mr. Kanungo to continue to stay with us and chip in. Maulana Sajid Rashidi, terrorists of Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Al-Qaeda, Islamic State, they use words like Ghazwa-e-Hind in the context of spreading terror in Hindustan or India. Sir, can a well-respected Islamic madrasa glorify Ghazwa-e-Hind? Sajid Rashidi साहब। जी भाई, सुनिए मेरी बात। कानून गो साहब भी कान खोलकर सुने, क्योंकि कानून गो इनके नाम के साथ लगा है। हजरत अबू हुरैरा 1400 साल पहले हुए। इमाम नसई जिसने किताब में इस हदीस को लिखा, वो सैकड़ों साल पहले हुए। हमारे तमाम मदरसों में हदीस की किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये हमारी आस्था है, जो भी जिहाद में मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा। मोहम्मद साहब के जमाने में जितने भी जिहाद हुए, जो भी उसमें मरा वो शहीद है। हमारी आस्था है ये, और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है मेरी आस्था को प्रकट करने का। क्या ग़ज़वा-ए-हिंद सही है मौलाना साहब? सुनिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। गजवा उस जंग को कहते हैं जिसमें मोहम्मद साहब बजाते खुद शरीक हुए। जब वो इस दुनिया में आज नहीं है तो हिंदुस्तान में गजवा कैसे हो जाएगा? मुझे जवाब दें कानून। ग़ज़वा-ए-हिंद से आप क्या समझते हैं? ये जो ग़ज़वा-ए-हिंद अभी पढ़ाया जा रहा है, भारत के खिलाफ युद्ध, हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। अरे भाई, ये नहीं, गलत इसका जो मतलब निकाला है कानून गो साहब ने, गलत निकाला है। इनके जहन का पता चल गया लोगों को। अब सुनिए बात, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं, कुरान में है। आपको याद होगा वसीम रिजवी ने ये कहा था कि 26 आयतें ऐसी हैं जो जिहाद को बताती हैं, उनको कुरान से निकाला जाए। अभी वसीम रिजवी साहब की बात नहीं करेंगे, वो यहाँ पर है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं किसी और मैं बाहर की मिसालें जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते उस पर मैं नहीं आऊंगा। अभी मैं इस मुद्दे पर हूं, ग़ज़वा-ए-हिंद का कॉन्सेप्ट, ग़ज़वा-ए-हिंद का कॉन्सेप्ट। एंड लेट मी ब्रिंग इन ज़ीनत शौकत अली। ज़ीनत शौकत अली जी, इफ इन्वेजन, मेरी बात पूरी नहीं सर, इसीलिए मैं आपसे निवेदन यही कहूंगा, आप तथ्यों पर रहे, आप इधर उधर की बातें ना करें, समय इधर उधर की ना हो, तथ्य पर हूं। इसी ग़ज़वा-ए-हिंद। अरे सुनिए मेरी बात भाई, मैं उसी को बता रहा हूं, आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं, ग़ज़वा-ए-हिंद सही है कि ग़ज़वा-ए-हिंद गलत है? अगर कोई आदमी ऑब्जेक्शन करे कुरान के ऊपर, कोई आदमी ऑब्जेक्शन करे हदीस पर, क्या मैं निकाल दूं उनको? अभी कानून को साहब कह रहे हैं ये हदीस निकलनी चाहिए, क्यों निकालें हम हदीस को भाई? ग़ज़वा-ए-हिंद कोई अगर हदीस बोलती है कि हिंदुस्तान पर हमला करो, ग़ज़वा-ए-हिंद सुनो, कानून उसको सजा देगा जो ग़ज़वा-ए-हिंद करेगा। ना तो ये हदीस ये कहती है ग़ज़वा-ए-हिंद करो, ना उस सवाल वाले ने पूछा ग़ज़वा-ए-हिंद करें क्या, ना मुफ्ती ने जवाब दिया कि ग़ज़वा-ए-हिंद करो, तो कहां से आ गया ग़ज़वा-ए-हिंद? ग़ज़वा-ए-हिंद
आज की पीढ़ी को अब गजवाए हिंद जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा वो बहुत बड़ा शहीद होगा, ये पढ़ाना कितना कितना सही है। ये तो हजारों साल से पढ़ाया जा रहा है और हजारों साल से हमले भी हो रहे हैं हमारे देश पर, हजारों साल से हिंदू नहीं कर रहा है, हजारों साल से हमले भी हो रहे हैं हमारे देश पर। लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद आज भी हमला कर रहा है हमारे देश पर। बट जीनत शौकत अली, if an invasion and conversion by sword was the concept in the times of Muhammad bin Qasim between 711 and 713 AD, and if terrorists like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Hizbul Mujahideen, Al-Qaeda, Islamic State continue to peddle the same agenda, what does this Ghazwa-e-Hind mean to you and this request or this instruction that has come from NCPCR, madam? It is absolutely legitimate. And this is first of all, let me tell Maulana Rashidi, this is a very weak hadith. And there is now an investigation going on as to what is a mutawatir hadith, what is a ahadi hadith, and what is a mashhur hadith. And the very well-known, His Royal Highness, Mohammed bin Salman has set up a panel to look and investigate into what is only the mutawatir or the right hadiths have to be accepted. You cannot take a weak hadith and say this is a hadith, so should we remove it or not? This is misleading. It is giving a bad name to Muslims. It is promoting Islamophobia. And it is, Devband has been a respectable place where Islam has been taught. But this kind of teaching can be very objectionable. This is treason against the country. मैम, इट्स अ बिग थिंग। आप बड़ी बात कह रही है, जो प्रियंक कानून को कह रहे हैं कि ये देशद्रोह है इस तरह की हदीस, इस तरह की हदीस भारत के खिलाफ, एंड यू आर सेइंग इट्स ट्रीजन। डॉक्टर विक्रम सिंह, एज फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस, एज समवन हु हैज डेल्ट विद टेररिस्ट्स इन आवर कंट्री, who parroted this Ghazwa-e-Hind line, what do you make of what the Darul Uloom has done, and what do you make of Mr. Priyank Kanungo as chairman of NCPCR expressing his concerns and wanting an FIR, sir? Good evening, Gaurav ji. I have nothing to do with mythology, philosophy and rituals. As a proud Indian, I would say that there is no scope of a jihadi mindset in the country today, and zero tolerance to any anti-national activities. Whatever be the historical context or whatever be the esteem one may have for waging war against India, let me tell you that no Indian will allow this on his dead body. Make no mistake about it, and don't live in a fool's paradise. One, not a word of condemnation about these historical facts. And to the contrary, there's a shameless defense of the fact that the FIR is being lodged after 15 years. FIR, Mr. Kanungo, is logically and legally very correct. An FIR can be lodged when the thing is brought to the notice of the concerned authorities. There is no legal immunity to the accused that it is being taken up after so many years, and there's also no immunity that there should be no elections around the corner. All these things are absurd and should be brushed, absolutely thrown into the dustbin. Now, I would say, all those who have advocated and have not condemned this, to the contrary, you are very right. Lashkar-e-Taiba, Harkatul Ansar, Al-Qaeda, ISIS, PFI, everybody used Ghazwa-e-Hind. It seems to be a very positive connotation. Mar gaye to shaheed, jeet gaye to ghazi, dono haath mein laddu, sar kadhai mein. This is totally unacceptable, ladies and gentlemen. And as a proud Indian, let me tell you, I'm speaking on behalf of New India, an India that has woken up. This kind of nonsensical humbug will not be tolerated any longer. Better condemn it. And as Madam has very rightly said, and as a proud Indian, please revise what you have to say and what you have to believe. Don't pollute the minds of the youngsters. And if you do, there are bound to be consequences. वो ज़माने चले गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे जनाब आली. अब वो नया ज़माना है. सबके साथ मिलकर के रहिए. And if you have any objection to it, live with contemporary history. History that is distorted, history that is perverted, no concept of ghazis and mujahids and also shaheeds. This is just not acceptable in the present context. And Gaurav ji, I would say, registration of a case, expeditious, fair and transparent investigation, and those who are at fault for not condemning. Even if you were to state a historical fact, you could have gone on record and said that this is not acceptable today. It may have had historical background, but you should have said with a proviso, with and also a hyperlink that this is not acceptable in today's time. But is not a word of condemnation. To the contrary, there is shameless defense also.
Okay, Priyank Kanungo, are you disappointed with this defense of such a hadith or such a concept of Ghazwa-e-Hind? What do you make of what Maulana Rashidi Sahib just said? I am feeling offended, not disappointed. On one hand, they are doing all these things, and on other hand, they are justifying their sins. So I feel offended, not just disappointed, but law will take its own course and they will be punished. I believe on the judicial system of India, I believe on the police system of India, I believe on the Parliament of India. They will be punished, they will be lodged under a FIR. I have faith in the state authorities. Fair enough, sir. मौलाना साजिद रशीदी जी, दारुल उलूम को क्या ये नहीं कहना चाहिए कि जो भारत के मुसलमान हैं वो इस तरह के गज़वा-ए हिंद या भारत पर हमले की ना वकालत करते हैं ना उसके साथ है, क्योंकि इस तरह की बातें तो वो लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी ही करते हैं। सर, ये जितने भी नाम आपने लिए हैं सारे पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तानी है कोई यहाँ ऐसा? सर, यहाँ पर 2 हिंदुस्तानी संगठनों का भी जिक्र किया गया था, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन, या जो पहले सिमी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था। देखिए, जिक्र को छोड़िए, अब तक नहीं सर, हम तथ्यों के साथ जिक्र करते हैं। गज़वा-ए-हिंद की जो बात करता है, क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरे भाई, तूने दूसरों को सुनते हो, मुझे सुनते नहीं, मुझे सुन लो ना। मैं 3 में अकेला हूँ। बताइए। मैं 3 में अकेला हूँ, वैसे भी माइनॉरिटी में हूँ, सुन लो। सर, मोहम्मद बिन सलमान साहब भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं। हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के। मैं सऊदी में थोड़े बैठा हूँ, मैं हिंदुस्तान में बैठा हूँ। धर्म तो वहीं से आया सर। सलमान क्या कर रहा है मुझे क्या पता? धर्म तो वहीं से आया ना सर। फिर वही बात, अगर मोहम्मद बिन सलमान धर्म को नहीं मानेगा तो क्या मैं हिंदुस्तान में बैठ के मानूं उसको? ना माने, वो उसकी मर्जी है, मुझे क्या करना है उससे? ना मैं पाकिस्तान को मानता, ना मैं सऊदी को मानता। मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम को मानता हूँ। जो इस्लाम की सच्ची पैरवी करेगा उसको मानूंगा। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में इसीलिए रहा है, पाकिस्तान को इसीलिए नकारा है हमने, क्योंकि पाकिस्तान की जो थ्योरी है, जो सोच है, वो गलत है। गज़वा-ए-हिंद की सोच गलत है। गज़वा-ए-हिंद की सोच गलत है, ये तीसरी बार पूछ रहा हूं आपसे। अरे मैं 10 बार बोलूंगा इस बात को। किसने बोला है गज़वा-ए-हिंद करने के लिए? फतवे में कहीं लिखा है? सर, आप कानून, आप मैं जीनत शौकत अली जी के पास फिर जाने पर इसलिए मजबूर हो जाऊंगा क्योंकि मेरा प्रश्न आपसे बहुत सीधा है। मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, क्या गज़वा-ए-हिंद गलत है? आप हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और आप हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं और आप पाकिस्तान नहीं गए, ये सब आपने कह दिया। क्या गज़वा-ए-हिंद गलत है? नहीं कि मैं ये से नो का जवाब दूंगा, रैपिड फायर नहीं है ये कि ये से नो का जवाब दूंगा। आप मुझसे जवाब सुनिए, जवाब दूंगा जवाब के तरीके से। रैपिड फायर मत खेलिए मेरे साथ में, मैं बहुत डिबेट में बैठता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं डिबेट में नहीं बैठता। साफ पता चल रही है। मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, क्या गज़वा-ए-हिंद सही है कि गलत है? मेरे देश की एजेंसियों को पता नहीं है कि दारुल उलूम में क्या पढ़ाया जा रहा है या पिछले 100 साल से क्या पढ़ाया जा रहा है। मेरे देश की एजेंसी इतनी वीक है क्या? आज ये सबक दे रहे हैं टीवी पर बैठकर। जीनत शौकत अली जी आपको खुद जवाब दे रही हैं। ये हमारी एजेंसियों से भी ज्यादा पढ़े हुए हैं क्या? इनको कानून गो साहब को देश की एजेंसियों का चीफ होना चाहिए था। ये प्रमोशन चाह रहे हैं अपना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जीनत शौकत अली जी, आयास रशीदी साहब at least 5 times, is Ghazwa-e-Hind wrong? He's actually dodged that question. What's your appreciation, madam? I think it is absolutely a weak hadith which has to be looked into. It is misleading. It is creating Islamophobia. It is giving a completely contrary understanding of the peace of Islam. I'm quoting to you a tradition of the Prophet Muhammad which says, "He who knowingly lends support to tyranny is outside the pale of Islam." And I'm telling you, Hubbal Watan Minal Iman means love for one's nation is part of one's faith. हिंदुस्तान में मुसलमान है. So therefore, when he's talking about Indian Muslims, he must understand that he should, just because something has been put inside from 2008 or it could be put out in 2000 or whatever year, what is not right has to be removed. Okay. Has to be deleted. And Islam has never taught the things of this kind.
Islam has taught you faithfulness and love for your country, to be a proud Indian, to be a proud Muslim, to be living in India. We are unique, we are separate, and we are different, and we are good people to show the world that and to say the right things. That is what we are here for. Dr. If you call yourself an Indian Maulana Muslim, Rashidi still doesn't say whether Ghazwa-e-Hind is correct or wrong. I've asked him this जो 6 times. सच्चा मुसलमान है वो देश के खिलाफ गतिविधि कर ही नहीं सकता। जो सच्चा मुसलमान है, ये आप दिखा रहे करने के लिए, जो सच्चा मुसलमान है वो कर ही नहीं सकता। Dr. Vikram Singh, as a former Director General of Police and someone who's dealt extensively with radical Islamic terror, and not just of LET and JEM that comes from Pakistan, but Students Islamic Movement of India and the Indian Mujahideen, sadly, Indian Muslims misused by ISI of Pakistan, is the concept of Ghazwa-e-Hind troublesome? Does it have the potential to create trouble for Bharat? Absolutely. You forgot the name to name the PFI also, and so other mushrooming institutions that have used the concept of Ghazwa-e-Hind and used it in their process of brainwashing and indoctrination. Now, as an Indian, I would say that any anti-Indian force, any force that is anti-Indian has no place, and they will be hunted down within the ambit of law and taken to task within the ambit of law. Therefore, to say and beating around the bush and not coming to the point and saying this has happened, this is historical, this is mythology, this is philosophical, this is ritualistic, this is individualistic. I salute Zeenat ma'am, for she has come out with the truth and the absolute truth, which a true Indian patriot would say. And I would expect everyone to be at least equal to the task of what Zeenat ma'am has said. But to be anything else, and I, again, as an ex-police officer and as a proud Indian, would say that any anti-national activity on anyone who has anti-India sentiments, there will be consequences. Okay. And there is absolutely no question of any tolerance of any such anti-India sentiment, whether it is Ghazwa-e-Hind or whether it is what you have. Okay. Let me bring in Priyank Kanungo once again Islam. into this conversation. conversation. Darul Haram and Darul Islam is totally unacceptable in India, at least. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath had earlier warned troublemakers that their dream of Ghazwa-e-Hind will never come true. Listen in to what he'd said. This was in February 2022. जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई-हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। Mr. Kanungo, as the chairman of the National Commission for Protection of Child Rights, what is your expectation, one, from the Saharanpur administration, and two, what would you expect Darul Uloom Deoband to do, sir? My simple expectation from Saharanpur administration is to lodge an FIR against such perpetrators. What I suggest to Darul Uloom Deoband is just get all the children enrolled in schools of your institution as well as the institutions affiliated by you. Okay. Zeenat Shaukat Ali, it may be, this concept of Ghazwa-e-Hind may be in a hadith, but if it is in conflict with the law in the land of Bharat, clearly that message should go out. India will run according to the law of the land, and perhaps not as what you described is in some hadith. Absolutely. You see, I just want to make one fine point here, Gaurav, if I may. Please, you see, the hadith, the collection of hadith itself has been questioned by, and the writing of it and the authenticity, because there are many kinds of hadith. Mutawatir hadith is something which is 100% right. Mashhur hadith is ahadi, means a single related. It's a big, huge science. Now, what this gentleman is quoting is a weak hadith.
is a weak hadith which could only have 10% authenticity. How can you even consider that? And therefore, His Royal Highness has set up Mohammed bin Salman has set up a panel to look into these hadiths. And I'm quoting, I'd like to quote from Kamal Abdul Rahmani, 5/8/2021, and he has said, in Al-Arabiya, and he has said that in the teachings in Mutawatir Hadith, which are well known, and look into the veracity and reliability of hadiths, and to disregard khabar, yani ki just urti hui hadith entirely, unless it is a clear benefit, it is good and derived from it for humanity, unless it's a humanitarian cause. So one has to understand that this is a huge science, and hijacking of such, religious, some deeply valuable religious literature is being distorted. If it was inserted in any kind of a website, whichever year, it should have been removed. And if fair enough. I will let that be the last word on this part of the show. Maulana Rashidi, Dr. Vikram Singh, Zeenat Shaukat Ali and Priyank Kanungo for joining me here on India Today. Many thanks. We'll track this story very, very closely. It's been 39 days since the Congress Party MP from Wayanad, Rahul Gandhi, embarked on his Bharat Jodo Nyay Yatra. He's covered around 11 states. He's currently traveling across Uttar Pradesh, where an outburst at a journalist triggered a storm on social media. Rahul Gandhi is in the eye of a storm for referring to Aishwarya Rai while talking about the Divya Bhavya Ram Mandir at Ayodhya. The Congress Party insists the yatra is not for electoral gains. The question is it generating enough traction? On the second leg of his nationwide tour, Rahul Gandhi is in the bellwether state of Hindi heartland. But the Congress leader's journey through Uttar Pradesh has stirred up controversy due to his remarks. मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ? आप शिव प्रसाद जी हैं. आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? Take this for instance. In Raebareli, his family stronghold, Rahul Gandhi has countered a reporter's question about his caste and that of his bosses, resulting in the journalist being heckled by party supporters. वो ओबीसी है? नहीं. वो दलित है? नहीं. वो आदिवासी है? नहीं. अरबपति है वो. The BJP in UP wasted no time in responding. It shared the video and condemned Rahul Gandhi's questioning of the reporter as disgraceful. During his Bharat Jodo Nyay Yatra in UP, Rahul Gandhi also targeted the Bachchan family, using the opportunity to make a political statement regarding the OBCs. उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था. उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे. Aishwarya Rai Bachchan did not attend the Pran Pratishtha, but Rahul Gandhi made her a central point of his speeches, sparking a trending hashtag regarding Aishwarya Rai Bachchan. In Amethi, the Gandhi sign remarked that he had witnessed inebriated individuals lying on the streets in Varanasi, the Lok Sabha constituency of Prime Minister Narendra Modi. वाराणसी में यूपी की सच्ची हालत, सड़क पे रात को हजारों युवा शराब पिए सड़क पे लेटे हुए वाराणसी में बाजा चल रहा है. शराब पी पी के पूरा आपके युवा वाराणसी में नाच रहे. The BJP fired back swiftly, terming his comments an affront to Uttar Pradesh. वो यूपी में जहां अभी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है, जहां प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ का पूंजी निवेश किया है, जहां नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, और वहां ये कह रहे हैं कि पूरा यूपी का नौजवान आजकल नशे में डूबा हुआ है. राहुल गांधी जी, शेम ऑन यू.
देश आप पर शर्म कर रहा है। कृपया करके अपनी भाषा को सुधारिए। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी का कौशल पूरा देश, पूरा विश्व मानता है और प्रदेश का, काशी का इस प्रकार से अपमान जो उन्होंने किया है, उनको हम माफी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो जो राहुल गांधी में नहीं है। Before the Yatra encountered political obstacles in West Bengal, with Alai Mamata Banerjee dismissing it as photo opportunity and challenging Congress to win more than 40 seats in Lok Sabha elections. বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসছে, আমরা নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স? একবার তো ইনফরমেশনটা দেবে, অমুক দিন থেকে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বাংলায় এই রুট দিয়ে, আর তো কিছু চাই না। একবারের জন্য জানাইনি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, রাজস্থানে গিয়ে হারিয়ে এসো, জেতা জায়গা হেরেছো। Previously, the JDU had exited the India alliance aligned with the BJP. Except for the RJD and the left, no other ally within the India coalition has so far joined Gandhi's Nyaya Yatra. This could be the worst time for you to leave headquarters and go for a yatra. Yatra was to be done maybe 6 months, a year before, 2 years before. Now is the time when you should be meeting with your strategic allies. You need to raise resources. You need to finalize your candidates. You need to firefight on daily basis. When you are needed at headquarters, you are in field. When you were needed to be in field, then you were sitting in Delhi. I don't know who advises them. Promoted as an ideological movement, Rahul Gandhi's Nyaya Yatra meanwhile is taking a break from February 26th to March 1st. During this time, the Congress leaders slated to visit Cambridge for lectures and meetings in New Delhi. For now, however, Rahul Gandhi's tour appears to have provided fresh fodder for the BJP ahead of the Lok Sabha elections. Bureau Report, India Today. We'll track that story closely, but that is all I have for you on this special edition of India First. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay with us.